हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर मेट्स के थर्ड सेशन में आप सबका स्वागत है। ये थर्ड सेशन केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं सो दैट वी कवर द एंटायर टॉपिक दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और NCERT केमिस्ट्री के डिफरेंट जो सब टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 के, उनको हम कवर कर रहे हैं। सो अगर आपने चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें और तब इस सेशन को ज्वाइन करें। However, those who have already watched those 2 sessions, welcome to this third session. तो इस सेशन में हम पिछले 2 पार्ट्स के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ रहे हैं एंड आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ का यानी क्वांटिटीज़ का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से दैट द वेट ऑफ दिस पेन इज 2 ग्राम, सो इफ आई राइट 2 ओनली, देन दिस वैल्यू हैज़ नो सिग्निफिकेंस, राइट? इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्या करना होगा कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें साथ में लिखना होगा 2 kg। सो व्हाट डू वी मीन हियर? सो एनी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैन बी डन इन 2 parts. The first part is the numerical value, that is the number, and the second part is known as unit, right? If the length of this pen is 6 meter, so 6 doesn't have any significance. अगर हम इसके साथ 6 मीटर लिख रहे हैं तो एक हो गया, पहला पार्ट हो गया नंबर और दूसरा पार्ट हो गया यूनिट, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। सो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, यूनिट सिस्टम्स हैं, जिनमें से मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी पॉपुलर, राइट? सो द मेट्रिक सिस्टम वॉज established in the year 1791 by a study committee of the French Academy of Science, and that became very popular in the world, in the scientific community. community में ये इसका बहुत importance मिला। और ये जो metric system है, basically it is based on measuring distance, length, weight, volume, etc. And basically there are 3 basic units, right? So it is based on 3 basic units. Here you can see 3 basic units with which we can measure almost everything in the world. So the first basic unit is M, that is meter. So M stands for meter. Now meter is used to measure the length. Similarly kg, the second basic unit is kg. So kg means kilogram and it is used to measure the mass. And the third basic unit is S, as that is second, and it is used to measure time, right? So today it is commonly referred to as SI, which stands for the System International, and it is also known as the International System of Units. So let us consider International System of Units or SI systems. तो ये जो SI systems है, SI System of Units है, ये proper definition देता है तीनों बेसिक यूनिट्स का, यानी मीटर का, किलोग्राम का और साथ में सेकेंड्स का, बट इसके साथ साथ ये कुछ एडिशनल यूनिट्स को भी डिफाइन कर सकता है। एंड दीज 4 एडिशनल यूनिट्स आर, यू कैन सी हियर, CD, that is candela. Candela is used to measure luminous intensity, right? You can see here. And then K stands for Kelvin, which is used to measure the temperature. And then similarly we can see ampere. Ampere is used to measure the electric current. And mole is used to measure the material quantity, right? So in that way these are being added and we get fundamental units. Now these are the 7 fundamental units which can neither be derived from one another nor they can be further resolved into any other units. यानी ये जो व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं, ना तो इनको एक दूसरे से डिराइव किया जा सकता है और ना ही इनके द्वारा किसी अदर यूनिट, दूसरी यूनिट को हल किया जा सकता है, राइट? तो इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं और ये दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन SI सिस्टम. सो लेंथ, मास, time, and then luminous intensity, temperature, electric current, and amount of substance. So these are certain physical quantities, 7 physical quantities. एंड इसको मेजर करने के लिए
यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कैंडला, केल्विन, एम्पियर एंड मोल. दीज आर द नेम्स ऑफ द यूनिट्स, रिस्पेक्टिव यूनिट्स, और ये इनके एब्रीविएशंस यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किए हैं. तो ये 7 मौलिक इकाइयाँ यहाँ पर हम लोगों ने एनलिस्ट की हैं. नाउ आफ्टर फंडामेंटल यूनिट्स वी कैन हैव some quantities which can be expressed as a function of more than one fundamental units, and these are known as derived units. इनको हम derived units या व्युत्पन्न इकाइयाँ भी कहते हैं, जैसे velocity हो गया, acceleration, work, energy. So these are derived units. So dear students, you can see here. So velocity का जो अगर unit की बात करें, so it is meter per second, m centimeter minus 1, meter second minus 1. That means it is a function of meter and second, more than one fundamental units. Area, square meter, right? You write here meter square. Volume, cubic meter, meter cube. Then density all of us know is mass upon volume. So kilogram, meter minus 3, kg, meter minus 3. Then energy, joule, force, Newton, frequency, hertz is cycle per second. Then Pascal is for pressure, and then it is Newton per meter square. And then electric charge, whose unit is coulomb, and the symbol is ampere second. So in that way we have discussed fundamental units and derived units. Now to change the scale of the basic units, जो basic unit है, जो मूलभूत इकाइयाँ हैं, उनके स्केल को चेंज करने के लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं, उपसर्ग का यूज़ करते हैं. So a prefix represents a factor by which the base unit must be multiplied, जिससे हम base unit को multiply करते हैं और उसके scale को define कर पाते हैं, right? Just for example, this table signifies the uses of prefixes. So iota means the symbol is y and it means 10 to the power 24. Zetao, z, symbol is z and it means 10 to the power 21. Exa and the symbol is E and it represents 10 to the power 18. So here in this way you can see peta, tetra, giga, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. So these are prefixes that are being used in order to represent these powers of 10, and these are the symbols. जो रेड कलर्ड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जैसे सेंटी. तो सेंटी symbol is C and it is 10 to the power minus 2. Milli means 10 to the power minus 3, micro 10 to the power minus 6, nano 10 to the power minus 9 and so on. So this is how we use matrix prefixes. इनको हम matrix prefixes भी कहते हैं. So matrix system और SI unit system की हमने बात की, जिसमें हमने matrix prefixes की भी बात की, और इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल देख के इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं. जैसे 1 सेंटीमीटर is equal to 1 into 10 to the power minus 2 meter, because all of us know that 1 meter is equal to 100 centimeter, right? So 1 centimeter is equal to 10 to the power minus 2 meter. So now 1 kg is equals to how many grams? 1000 grams. So 1 gram will be equal to 10 to the power minus 3 kilogram. इसका रिवर्स हो जाएगा. 1 microliter is equals to 1 into 10 to the power minus 6 liter. 1 angstrom is equals to 1 into 10 to the power minus 10 meter. Right? So in that way we can see that how do we use the metric prefixes here. And this is the very beautiful metric system chart. So how do we use the conversions? How do we convert one fundamental unit to the other unit? Right? So here you can see for length we use centimeter, millimeter. 1 centimeter is equals to 10 millimeter. 1 millimeter is equals to 0.1 centimeter. 1 meter is equals to 100 centimeter and so on. So these are the conversions. This chart represents the metric system chart and this represents conversions. So for mass also 1 centigram is equals to 10 milligram. 1 milligram is equals to 0.1 centigram and so on. Right? So to convert meter to centimeter we multiply by 100. To convert centimeter to millimeter we multiply by 10. To convert kilometer to meter we multiply by 1000. I hope it is clear to everyone, right? So we will consider some more examples. Let us start with weight measurement, right? So standard unit for measurement of weight is kilograms, right? Here we can see
that we measure weight with the unit kilogram. So let us see some examples that show where the weight measurements are typically used. जैसे 2 एप्पल्स का वेट लगभग 100 ग्राम्स है. So 100 grams is being used here. Weight of a brick is about 1 kilogram. एक ब्रिक का वेट 1 किलोग्राम है, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया वेट मेजरमेंट का. And then an elephant weighs approximately 5 tons. Right? So now how can we convert one unit to the other unit? So let's have a look at the conversions of metric units of weight. So for example, ton से अगर हमको kg में convert करना है, so what we are doing here, we have to multiply it by 1000. Similarly 1 kg से ग्राम में convert करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 1000 से multiply करना होगा. 1 gram to centigram, so we'll have to multiply it by 100, and then centigram to milligram we'll have to multiply it by 10. नाउ इसका रिवर्स देखते हैं. अगर हमको मिलीग्राम से सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना होगा, हमें 10 से डिवाइड करना होगा. सिमिलरली सेंटीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें 100 से डिवाइड करना होगा, एंड सो ऑन. So this is how we can see that how one metric unit can be converted into the other unit. So this we have considered weight measurement. Let us consider capacity measurement. Capacity का मतलब क्या होता है? So capacity is used to measure the volume or the space occupied by any object. तो standard unit क्या है measurement of capacity के लिए? That is liter, right? So here we have mentioned liter. और भी example लेते हैं, जैसे a liter of milk, 500 ml of oil and 2 gram of crude oil. So in that way these are the units that can measure the capacity. अब इसका conversion chart देख लेते हैं. So किलोलीटर से सपोज लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. 1 लीटर से सेंटीलीटर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. सेंटीलीटर से मिलीलीटर 10 से मल्टीप्लाई करना हुआ. एंड देन व्हाट वुड बी द रिवर्स, लाइक इफ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट 1 milliliter to centiliter, then it will have to divide it by 10, and then centiliter to liter divided by 100, and so on. So इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि metric conversion of capacity can be done in this manner, and we will consider some examples, but let us consider the length measurement as well, conversion unit as well. तो यहाँ पर देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, राइट? तो इसको 10 से हमने डिवाइड किया है, जबकि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है. लाइकवाइज सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से डिवाइड किया है, जबकि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है. इसी तरह मीटर से किलोमीटर, तो हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा. किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. So let us consider now some typical examples. So first example is the question is convert 752 centimeters to meters. तो इसको कैसे हम solve कर सकते हैं? So 1 meter is equal to 100 centimeter, all of us know. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 centimeter is equal to 1 meter, right? Therefore 1 centimeter is equal to 10 to the power minus 2 meter, right? And hence 752 centimeter will be 752 into 10 to the power minus 2 meter. तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करें, 752 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 7.52 मीटर. All right, so let us take this question. Convert 4000 grams to kilograms. So in this particular case, all of us know that 1 kilogram is equal to 1000 gram, right? So we can write in this reverse manner, 1000 gram is equal to 1 kg, and therefore 1 gram is equals to 10 to the power minus 3 kg, and hence 4000 gram will be equal to 4000 into 10 to the power minus 3, that is 4 kg. So this would be the answer. Next question is convert 80 grams into milligrams. So here all of us know that 1 grams is equal to 1000 milligram, and henceforth 80 grams will be equal to 80 into 1000 milligram. So 8 into 10 to the power 4 milligram would be the answer. Now last question is Rahul saw a giant fish
in a pond that was 600 centimeter long. Help Rahul calculate its length in millimeter. So we can write in this manner 1 meter is equal to 100 centimeter and it is equal to 1000 millimeter. So centimeter और millimeter में क्या relationship है? 100 centimeter is equals to 1000 millimeter. Therefore 1 centimeter is equals to 10 millimeter. And therefore 600 centimeter will be 600 into 10, that is 6000 millimeter. Right? So dear students, हम सब ने देखा कि किस तरह से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेट्रिक सिस्टम क्या है, एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम्स क्या है. सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट लर्निंग.